आज हम 6 पार्टिकल सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं. This is regular hexagon. कैमरा ऑन कर लो. साइड ए. We can name these A, B, C, D, E, F. O is the center of the hexagon. इसके हर वर्टेक्स पे there is a charge Q, which is positive. Each vertex we have charge Q. And at the center also we have a charge Q. At center O also we have charge Q. So there are 7 charges as such, and the question is find the net force. First part at on Q at O, and the second part is on Q placed at F. So charges are distributed with the 6 vertices. There's one charge at the center, and the question is find the net force at the central charge O, and also find the force on the charge Q which is placed at F. First we answer the first part. First part answer करो पहले. Force on Q at O. Force on the charge Q which is placed at the center. How many charges in the surrounding to O? Make 6 charges. In the surrounding of O we have 6 charges. We'll first find the magnitude of all these charges. And मैंने पहले ही बताया था रेगुलर हेक्सागन में इंटीरियर एंगल 120 डिग्री होता है. As a result, all these will be equal to A only. In a regular hexagon, all triangles, 6 triangles are there, which are basically equilateral, and the side is A. We can find force on the charge at O because of A, force on the charge at O because of B, because of C, because of D, because of E, and because of F. इन सबके मैग्नीट्यूड्स फाइंड करेंगे पहले. Forces acting at the central charge because of all these charges at the vertices. फाइंड करो और फिर इसका डायरेक्शन भी देखो. फाइंड these forces and then see the direction as well. बताओ मुझे. by a square. Right. So all these forces will be the same in magnitude. KQ by A square. KQ square by A square. All these are equal in magnitude. But we know that a force is a vector quantity. इसीलिए हमें इनकी डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी. तो पहले 3 की डायरेक्शन महक तुम बताओ और लास्ट 3 की डायरेक्शन इशिता बताएगी. फर्स्ट 3 की डायरेक्शन बताओ महक. ओ का So डायरेक्शन. A to O, like A to O.
यहीं पे मार्क कर लेते हैं. Force on O because of A. You can say Yeah. towards OD, है ना? Towards OD. Right. This is better. So this is force on O because of A. ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इसको पुश करेगा. हमें इसका मोशन देखना होता है इशिता, जिस पे हम फोर्स निकाले उसका मोशन देखना होता है. दैट चार्ज विल मूव टुवर्ड्स ओडी. एफओबी का डायरेक्शन, Towards E, like OE. ये पॉजिटिव इसको पुश करेगा. तो दिस इज एफ ओ बी. देन एफ ओ सी. Towards OF, like CO. This positive will push this away. F O C. Now Ishita, your chance. For D, it is towards OA, This is F O D. Perfect. and for E, it is towards OB, Right. F O E. And finally and this for force. towards OC. Right. Now you notice one thing, that these forces pairwise will cancel out. They are equal and opposite, and hence pairwise they will cancel out. You can lick low scope. These forces are equal and opposite in direction, hence pairwise they will cancel out. So the net force at O will be zero. Therefore, the net force on the charge at the central charge would be zero. These forces will cancel out in pairs. As a result, the net force would be zero. Up the second part of the question. The second part of the question, we have to find the force on the charge which is at F. तो मैं इसको हटा रहा हूं अब. The second part is force on Q at F. तो charge which is being placed at F, उस पर हमें force निकालना. Now, force इस चार्ज की सराउंडिंग कितने, इसके सराउंडिंग में there are how many charges? Again, there are six charges because even this charge would push this charge, है ना? So let's find the force on F because of O, force on F because of A, force on F because of B, force on F because of C, force on F because of D, force on F because of E. 1, 2, 3, 4, 5, 6. इनका मैग्नीट्यूड निकालो पहले, then we'll see the directions, and then we'll decide how to find the resultant. There are six forces acting on this charge. First, the magnitude of force. देखो, F पे O की वजह से, F पे A की वजह से, B की वजह से, एंड सो ऑन. ये वाला डिस्टेंस तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा. दिस डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा बाय सिमेट्री. बताओ. एफ हो तो सिंपल है. इट इज के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एफ एफ ए.
ये वाला डिस्टेंस भी सेम होगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, नो इश्यू। एफ एफ बी, ये वाला तुम्हें डिस्टेंस देखना पड़ेगा कितना है। इसको फॉर अ मोमेंट मैं एक्स ले लेता हूँ, बाद में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एफ एफ सी कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा ए प्लस ए, दैट इज 2a। एफ एफ डी वापस एक्स हो गया। एफ एफ ई के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो जाएगा। नाउ हाउ वुड यू फाइंड एक्स, टेल मी। एक्स वाला डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? इशिता, महक, एनी आइडिया? So diagonal of a parallelogram. और डू यू रिमेम्बर समथिंग, कोसाइन रूल? लिखो, ये बहुत काम आएगा। ये सपोज वी हैव अ ट्राइंगल लाइक दिस, जिसमें ए के ऑपोजिट साइड ए है, बी के ऑपोजिट साइड बी है, सी के ऑपोजिट सी है, एंड सपोज आई फाइंड कॉस ऑफ ए। ठीक है, तो कॉस ऑफ ए इज ऑलवेज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। बहुत काम आएगा। कॉस ऑफ ए, साइड का स्क्वायर का सम माइनस ऑपोजिट का स्क्वायर बाय 2bc, इसको कोसाइन रूल। तो जब भी किसी ट्रायंगल में तुम्हें तीन साइड दे रखी है और तुम्हें एक एंगल पता है और एक एंगल निकालना है कोई सा भी, तो वी कैन यूज दिस। अगर सपोज तुम्हें बी फाइंड करना है, कॉस बी निकालना है, तो कॉस बी क्या होगा? जो एडजेसेंट साइड्स है ना, उनको इसका उनके साइड के स्क्वायर को ऐड कर दो, ऑपोजिट वाले को माइनस कर दो बाय 2ac। अगर हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, कॉस सी करना है तुम्हें, तो कॉस सी में क्या करोगे? एडजेसेंट साइड कौन सी है? बी एंड ए। तो जो सी के ऑपोजिट है वो सी है, उसको माइनस कर दो, 2ab हो जाएगा। तो यूजिंग दिस कोसाइन रूल यू कैन फाइंड आउट एक्स के वैल्यू। तुम्हें ऑलरेडी मालूम है ये एंगल कितना है ये एंगल। दिस एंगल इज 120 डिग्री। दिस एंगल इज 120 डिग्री। तो यूज cos a, cos 120 एंड टेल मी क्या वैल्यू आएगी, बताओ। एडजेसेंट साइड इस एंगल की ए और ए है, ऑपोजिट साइड एक्स है। इफ आई यूज cos 120, cos 120 वुड बी, एडजेसेंट साइड कौन कौन सी है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ऑपोजिट साइड कौन सी है? ये हो जाएगा 2a इंटू ए, 2a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा लिख लो पहले। cos 120 कितना होता है? cos 120 Nine minus half. माइनस हाफ, cos 120 विल बी cos 180 माइनस 60। 120 सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस cos 60, दैट इज -1/2। ये वैसे याद होना चाहिए रिजल्ट। तो -1/2 सब्स्टिट्यूट कर दो, ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा, तो -a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। So that gives you x square is equal to 3a square. That gives you x is equal to root 3a. X की वैल्यू रूट थ्री आ गई। So this side is basically root 3 है। तो हम x को रूट 3 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे। तो दिस इज रूट 3a का होल स्क्वायर, ये भी रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया। दिस इज ऑल्सो रूट 3a होल स्क्वायर। So now we know all forces and their magnitudes। अब हमें सिर्फ डायरेक्शन देखना है और उनको
वेक्टोरियली ऐड करना है बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो वी हैव टू लुक इनटू द डायरेक्शन एस्पेक्ट आल्सो। ये लिख लेना, ये काम आएगा। दिस वी हैव डन इन मैथ्स। इस साल दोबारा कैसे करेंगे ये। कोसाइन रूल बहुत काम आता है जब भी किसी ट्राइंगल में तीन साइड पता है और तुम्हें एक एंगल फाइंड करना है, या एक एंगल दे रखा है बाकी दो साइड दे रखी है और तुम्हें थर्ड साइड फाइंड करनी है। वी यूज दिस कोसाइन रूल। अब वन बाय वन विल सी द डायरेक्शंस एंड फिर उसका रिजल्टेंट फाइंड करें। तो डायग्राम बड़ा सा बनाया ना तुम लोगों ने, तो डायग्राम हैज टू बी नीट एंड क्लीन, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी सर। अगर डायग्राम छोटा बना है उसको वापस बड़ा कर लो साफ, क्योंकि यहाँ पे सारे फोर्सेस की डायरेक्शन अब दिखाई जाएगी। तो फर्स्ट एफ ओ ओ, महक, एफ ओ का डायरेक्शन बताओ। Along the straight line, like टुवर्ड्स, away from F राइट, टुवर्ड्स towards, लेफ्ट यू कैन से, है ना। yeah. दिस इज एफ एफ ओ, परफेक्ट। एफ ओ बी का डायरेक्शन बताओ इशिता। एफ ओ बी का डायरेक्शन क्या होगा। So away from F along the line FB. एफ ओ बी, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव को पुश कर रहा है, ये पॉजिटिव को पुश कर रहा है। आई एक्सटेंड दिस, दिस इज एफ ओ बी। देन एफ ओ सी, महक, एफ ओ सी, सॉरी So along हाँ एफ एफ सी, along the same line as F, FO, राइट। और सो आगे दिस इज फोर्स ऑन एफ बिकॉज ऑफ सी। देन एफ एफ डी, शिता, Along the line DF away from F. यू एक्सटेंड दिस लाइन, इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, एंड दिस फोर्स इज एफ एफ डी, एंड देन एफ ई एफ, force on F because of E. महक, so from E to F, away from F. no, force on F because of E. This one. Yeah, like E to F, starting from F. This is F F E, and the one more is left, which is A F. Force on F because of A. Force on this Along the because of. line AF away from F. So this is force on F because of A. All these forces are like this. I draw a vertical line. This time many forces are acting. Out of these many forces, six forces, two are along x-axis and other are not along a x or y axis. That means either I use component business to find the resultant force, या तो उनके हम component लेंगे, और else इनको हम पैरेललोग्राम मेथड से भी कर सकते हैं, बाय सिमेट्री ऑल्सो। ठीक है। लुक एट दिस फोर्स, ये तो हम किससे कंपोनेंट से करना है या पैरेललोग्राम मेथड से करना है। सिमेट्री भी है तो पैरेललोग्राम से तुम्हारा इजी हो जाएगा करना। कैन यू टेल मी दिस एंगल, ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना होगा। This angle is the same as this angle, agree। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। कितना है ये एंगल, ये पैरेललोग्राम में ये 120 है, पूरा 60 तो उसका आधा कितना हो जाएगा। 30. पैरेललोग्राम में डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करता है, पूरा एंगल 60 है ये वाला,
तो ये 30 हो गया, तो दिस एंगल इज 30, लिख लो, दिस एंगल इज 30। नजर आ रहा है ये एंगल 30? कैन यू सी दिस? ठीक है, तो बाय सिमेट्री ये नीचे वाला एंगल भी 30 होगा। एज a result 30 plus 30, this would be 60 degree. Now see that I have two forces, FFD and FOB. I have two forces. This is not OB, this should be FB. I have force FFB and I have force FFD. Are they equal in magnitude? देखो, दोनों का Yes, sir. मैग्नीट्यूड इक्वल है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 60 degree. degree. 60 So degrees. when two forces of equal magnitude act at 60 degrees and two forces of equal magnitude act at 60 degrees, तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है? Root लिखवाया था 3. रिजल्ट, Okay. रूट 3 times each. So the resultant of this and this would be root 3 times each, any of them. FD लिख देता हूं मैं. Now these two are gone. I have written the result. Clear होगी बात? अब look at this force FFA. ये वाला एंगल बताओ कितना है? जो मैंने डबल मार्क किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस का एंगल एफ एफ ए के साथ कितना है? दिस एंगल इज द सेम एज दिस एंगल। जो ये वाला एंगल है वही एंगल ये वाला होगा। ढंग से देखो डायग्राम में, 60 degrees. 60 होगा। ये वाला एंगल 60 डिग्री है। दैट मीन्स इसके जो नीचे का सिमेट्री से एंगल है वो भी 60 हो गया, ये वाला एंगल भी 60 हो गया। तो इफ आई मार्क टू फोर्सेस एफ एफ ई एंड एफ एफ ए, दो फोर्सेस है एफ एफ ई एंड एफ एफ ए, दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, इनको मैंने एरो से मार्क कर दिया। ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है और इनके बीच का एंगल कितना हो गया? ये टोटल एंगल, द एंगल इन बिटवीन इज 120 डिग्री। 120. ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल 120 है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो व्हेन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट एट 120 डिग्री ईच, तो रिजल्टेंट कितना होता है? So it is the same. इट इज द सेम। दैट मीन्स इन द सेम डायरेक्शन इन दोनों का रिजल्टेंट लगेगा। मैंने उसको लिख दिया एफ एफ ए, मतलब these two forces also gone। अब हमने सभी का रिजल्टेंट निकाल लिया है। नाउ वी लेफ्ट विद फोर फोर्सेस, एफ एफ सी, एफ एफ ओ, एफ एफ डी, एफ एफ ए, जो कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। उन सबको ऐड कर लो एंड दैट विल योर रिजल्टेंट फोर्स। तो द नेट फोर्स और द रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स ऑन एफ का जो मैग्नीट्यूड है, इट वुड बी मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एफ ओ प्लस एफ एफ सी प्लस √3 times FFD plus FFA, इन सब का सम। दैट विल बी योर आंसर। देखो कितना आ रहा है? FFO is KQ square by A square. FFC is KQ square by 4A square. FFD is KQ by 3A square. KQ square by 3A square. FFA is that fine? And take common, KQ square by A square common आ गया 1
plus 1 by 4 plus root 3 by 3 plus 1. KQ square by A square. 1 plus 1 is 2, और 2 में 1 by 4 भी ऐड कर दो, n by 4 and 1 by root 3 over it. And towards right, towards left, sorry, negative x by 8. So that is your final answer.